मैं हूं आपकी फ्रेंड अवनी और आज मैं हूं एक अनोखे एडवेंचर पे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं हूं एक रेप्टाइल ज़ू में। सो दिस रेप्टाइल ज़ू इज़ लोकेटेड इन वॉन ऑन्टारियो। तो अगर आप टोरंटो में हैं, दिस प्लेस इज़ अ मस्ट चेक आउट। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो यू गाइज कैन चेक दैट आउट। ऑल्सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, बेसिकली ये जो रेप्टाइल ज़ू है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे over 250 reptile species and amphibians from across all over the world, and this place is one of the largest reptile zoos in Canada. तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। Let's fly without wings. So we have now parked our car in the parking lot, and this is the reptile zoo. It is called Reptilia. So now we are going to go and enter this zoo from the entrance. So basically we have purchased the tickets online from their website to visit this zoo, and once again I will be putting all the details as much as I can regarding this zoo and how to purchase the tickets and all those details in the description box. So do check it out. Now we are going to head towards the entrance. So this is the main entrance. So we just finished scanning our tickets at the registration office here, and now we are entering to view the reptiles from here. Welcome everyone. Welcome to our 11:45 feeding today. For those of you that I have not met, my name is Kyle. I'm the head zookeeper here at Reptilia Vaughan. We're going to be offering some food to our friends behind me here. We have two American alligators. We have Blue and Toothless. But the rabbit's still alive? No, it's a dead rabbit. So the first reptile here is this one. The name of this reptile is green iguana. Next is Madagascar giant day gecko.
this is the spiny tail iguana. So next is yellow anaconda. So this is slash. It's a common snapping turtle. So next is Jafar, and this is the carpet python. And here is Jafar. So next is Burmese python. So this is the Burmese python. Just look at this. So next is Argentine black and white TEGU. So this is one type of a lizard. Next is common garter snake. So these are the common garter snakes. Next is buck, the Australian water dragon. So this is buck, the Australian water dragon. So we are going to the theater and we are going to be viewing the educational presentation for the reptiles. So this is Oh. This is Orion. Orion is our giant Asian contour. Mouth and teeth can bite you, even a person, if you annoy them enough. But he will not bite since we're not going to put our fingers in front of his face. तो गाइस, अब मैं रेप्टिलिया ज़ू जाकर आ चुकी हूँ और इट वॉज़ अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, स्पेशली जब भी मैंने वहाँ पर पाइथन का फीडिंग देखा और क्रोकोडाइल फीडिंग देखा. इट वॉज़ अ वेरी यूनिक एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है. चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग.